मेरा मन लागा है राम प्यारे, दीन दयाल करी प्रभ कृपा, वस कीने पंच दुतारे। तनासरी महला चौथा। मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए, हमरी बेदन तू जानता शाह, और क्या जाने कोय। मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए, हमरी बेदन तू जानता शाह, और क्या जाने कोय। रहाओ साचा साहिब सच तू मेरे शाह, तेरा किया सच सब होए, झूठा किसको आखिए शाह, दूजा नाही कोय। सबना विच तू वरतदा शाह, सब तुझ है ध्यान है दिन रात, सब तुझ ही थाम हो मंग दे मेरे शाह, तू सबना कर है एक दात। सबको तुझ ही विच में है मेरे शाह, तुझ ते बाहर कोई ना है, सब जी तेरे तू सब सदा मेरे शाह, सब तुझ ही माहे समाहे। सबना की तू आस है मेरे प्यारे, सब तुझे त्या मैं मेरे शाह, ज्यों पावै त्यों रख तू मेरे शाह, ज्यों पावै त्यों रख तू मेरे प्यारे। सच नानक के पातशाह, सबना की तू आस है मेरे प्यारे, सब तुझ है त्यावै मेरे शाह, ज्यों पावै त्यों रख तू मेरे प्यारे। सच नानक के पातशाह। सतगुरां दी साजी निवाजी साध संगत जीओ, प्यार नाल सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह दी सांझ पानी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरां ने अज दा पवित्र हुक्मनामा अपार किरपा दे घर दे विच आके सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब तो बख्शिश कीता है। सो पहला पंजाबी बाद दे विच अंग्रेजी दे विच विचार श्रवण करना जी। सो टुडेज हुक्मनामा इज ब्लैसिंग फ्रॉम सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब। प्लीज listen to the vichar, the explanation of Hukmnama in Punjabi to start with for first 10 minutes, followed by translation in English. आज दे पवित्र हुक्मनामे विच धन धन गुरु रामदास जी महाराज फरमाते ने, मैं दुनिया दे सारे सुख टोल के अजमा के इस सिट्टे ते पहुंचे। मेरे शाह
मैं हर दर्शन सुख होए। मेरे शाह, मेरे परमात्मा, मेरे मालका, तेरे दर्शनां तो बिना किसी भी चीज़ दे विच, किसी मायक पदार्थ दे विच सुख नहीं। परिवार, होर दुनिया के पदार्थ, भावें नौखंड पृथ्वी का राज मिल जाए, उहदे च भी सुख नहीं। मेरे मालका, तेरे दर्शन करके मैनू सुख प्राप्त होया। हमरी बेदन तू जानता शाह, अवर क्या जाने कोई। बेदन का भाव दिल की पीड़। मेरे मालका, तेरे मिलन की इच्छा सी। मेरे हिरदे विच पीड़ सी भी तैनू किद्दां मिलां, पर कोई भी दुनिया का इंसान समझ नहीं सकिया उस पीड़ नूं। उही समझ सकदा जिहदे हिरदे विच आप पीड़ होए। साध संगत जी, किसी नूं आप तुसीं अपने विचार साझे करो या दरखास्त करो भी मेरे हिरदे च बहुत इच्छा है परमात्मा नूं मिलन दी, ते लोकी हस छड़दे अग्गे। सो कत जाने पीर पराई, वो किद्दां जान सकते हैं भी कि तेरे हिरदे विच पीड़ है, क्योंकि उन्हां दे अपने हिरदे विच पीड़ नहीं। आप उन्हां नूं दर्शन नहीं होए वाहिगुरू दे। मेरे मालका, तू मेरे हिरदे की पीड़ नूं जानदा। हमरी बेदन तू जानता शाह, अवर क्या जाने कोई। होर किनू दसां जाके। रहाओ। साचा साहिब सच तू मेरे शाह, तेरा किया सच सब होए। हुण गुरु रामदास जी महाराज उस परमात्मा नूं मिलन दा ढंग दसदे ने भी मन दे विच दृढ़ विश्वास हो जाए भी तू सच्चा साहिब है, जो तू करदा वो सच हुंदा। कोई गिला या शिकवा ना होए जिंदगी दे विच भी परमात्मा ऐ की कर दिता। मिलन दा ढंग आ। झूठा किसको आखिए शाह, दूजा नाही कोई। लोकां दी सारी उम्र बीत जाती आ लोकां नूं झूठा जताउंदियां। मनदे ना गल नूं भई वो झूठा, मैं चंगा, मैं सच्चा। सारी उम्र साध संगत जी बीत जाती है। कबर दे विच भी इंसान उंगली बाहर चुकदा ते कहंदा वो झूठे आ, मैं ते सच्चा। महाराज कहंदे परमात्मा नूं मिलना ते मन दा एक भरोसा होए, मन विच भरोसा होए कि मैं किनू झूठा कहां, तेरे तो बिना कोई होर नज़र नहीं आउंदा। सबना विच तू वरतदा शाह, सब तुझे ध्यावें दिन रात। मेरे मालका, मैं पंछियां वाला देखदा, तू उन्हां दे विच भी वरतदा। मैं सूरज वाल तकदा, सूरज दे विच भी तेरी जोत है। मेरे मालका, तेरी जोत तो बिना, तेरे जोर तो बिना धरती एक टिकाने ते रह नहीं सकती। दुनिया तेरी जोत तो बिना रह नहीं सकती। सब मह जोत, जोत है सोए, तिसदा चानन सब मह चानन होए। गुरसाखी जोत प्रगट होए। यह जोत नूं प्रगट करने का एक तरीका गुरु की साखी, भाव गुरु की सिक्ख्या। गुरु की सिक्ख्या लैके अपने जीवन नूं गुरु आशे अनुसार ढालना, तां वो जोत प्रगट हुंदी आ। सबना विच तू वरतदा शाह, सब तुझे ध्यावें दिन रात। महाराज कहंदे ने सारे ही तैनूं ध्याउंदे ने। साध संगत जी, कल दा हुक्मनामा सी, धरती तेरा नाम जपदी आ।
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਧਰਤੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਆ, ਪਤਾਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਹਵਾ, ਅੱਗ, ਪੌਣ, ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਧਰਤ ਪਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ, ਸਭ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇਂ ਰਾਮ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਸਤਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਕਣ ਕਣ ਹਰ ਬੂਟਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਹਰ ਬੂਟਾ। ਵਨ ਤ੍ਰਿਣ ਸਭ ਆਕਾਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੰਦੜੀ ਹੈ, ਮੁਖ ਹਰ 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 ਅਰਾਧੇ ਰਾਮ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੂਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਥਾਵੋਂ ਮੰਗਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਰੇ ਇੱਕ ਦਾਤ। ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਪਸਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ। ਤਾਂ ਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਉਹ ਸਭ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਰੇ ਇੱਕ ਦਾਤ। ਲੋਕੀ ਮੰਗਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਕੋਈ, ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸਭ ਕੋ ਤੁਝ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ, ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਸਬਸਤਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ, ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਈਏ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚਾਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਅੱਜ ਖੇਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭਨਾ ਕੀ ਤੂੰ ਆਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਭ ਤੁਝੇ ਧਿਆਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ। ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਆਸ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬੈਠਾ। ਤੇਰੀ ਆਸ ਹੈ ਮਾਲਕਾ, ਤੇਰੀ ਆਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਚ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰ ਸਵਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਟੁਡੇਜ਼ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਜ਼ ਬਲੈਸਿੰਗ ਫਰੋਮ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, composition of Dhan Dhan Guru Ramdas Ji Maharaj, the fourth Satguru, fourth embodiment of Dhan Dhan Guru Nanak Dev Ji Maharaj, who carried forward the mission of Khalsa Panth. Guru Maharaj has composed today's Hukamnama in Rag Tanasri.
that creates the calm and cheerful mood, helps to focus the mind. So in today's Hukamnama, Guru Maharaj reveals that I have tried and tested everything in my life. The peace only comes when you experience God. When you experience God, peace won't come otherwise. मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए. Shaha means Lord and Master. Oh my Lord and Master, only when I saw you, when I experienced your presence, then I was peaceful. Otherwise, I have wasted my lifetime. Sukh nahi bahut hai dhan khat hai. I earned a lot of money in my life. I saved for my retirement. But even though I have so much money, I'm not peaceful. There are so many people, Sat Sangat ji, who are billionaires, but they don't have time, they don't have energy in their body to spend that money. There's no peace. Sukh nahi pekhe nirt nate. There's no peace, no happiness in life, even if you watch many nirt, the dramas, the movies, there's no peace. Source of entertainment. Movies and dramas and TV are used as a source of entertainment. But Guru Maharaj reveals the true peace does not come from entertainments and players of material. Sukh nahi bo desh kamaye. People travel to different countries to earn more money. People have businesses set up in different countries. But Guru Maharaj reveals, although one has businesses set up in different countries, there is no peace. Sarab sukha har har gun gaye. So how do you attain peace? Vaheguru de gun gao. Sing the praises of virtues of Vaheguru. What happens when you praise Vaheguru? Whatever you say from your mouth, whatever you think, that will reform your mind. It will change your mind. If you talk useless words, then mind and body will become dry. Nanak fikka boliye tan man fikka hoye. When you talk droy, when you slander someone, when you tell lies, your mind and body will suffer. Body will catch illness. But when you praise God, all those virtues, all that peace which God has in abundance will transfer onto you. So sarab sukha har har gun gaye. In 24 hours, how much we talk, we need to analyze at the end of the day. Was that useful? Do I feel connection with God after the day has passed? Or am I thinking about the argument I had with someone? Or am I thinking about the movie I watched? If that is the case, that you are disconnected with Vaheguru, all your talking is wasted. That's what Guru Maharaj is telling us today. हमरे बेदन तो जानता शाह अवर क्या जाने कोई. You know, when you are desperate to get something and you explain to someone else, try to get help. People can help in worldly matters. But when it comes to
your desperation, your need, desperate cry to meet God, people will laugh at you. You can try today. Tell your friend that you want to meet Vaheguru. Your friend will laugh at you. Ask your family members that you are desperate to meet Vaheguru. People won't appreciate that, won't understand that. So Guru Maharaj is saying, the true peace comes from your darshan Vaheguru. When I see you, I get true peace. But you only know my bedan, the pain of separation in my mind. Avar kya jane koi, no one else understands this. When Guru Nanak Dev Ji Maharaj was young, he used to remain immersed in meditation. He used to remain immersed in God's love. Parents, Mata Tripta ji and Father Kalyan Das ji, they thought Guru Nanak has become ill. So they called the physician, the Ved, and Ved started checking the nerve of Guru Nanak Dev Ji Maharaj. He started checking the pulse and said there is no illness. His temperature is fine. So even Guru Nanak Dev Ji's parents could not understand the desperation, the desire Guru Nanak Dev Ji had to meet God. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj said to the Ved, वैद बुलाया वैद की पकड़ टंडोले बाँ भोला वेद ना जानी करक करेजे माहे. Poor doctor doesn't know that I have the karak. Karak means pain. Kareje means heart. I have pain in my heart. That's why I can't eat. I don't feel like eating. And I don't want to eat until I see Vaheguru. Satsanga ji, how did Bhagat Tanna ji meet Vaheguru? He had food in front of him and he said, I'm not going to eat food today, Vaheguru, until you eat with me. We are in a rush to eat food. We don't care about Vaheguru. We don't even remember Vaheguru. Satsanga ji, there is a teaching today. Remember Vaheguru before you eat. Remember God before you breathe, which means you are breathing all the time. You have to remember Vaheguru all the time. Saas saas simro gobind, man antar ki utre chin. Then you will become carefree. All your anxieties and worries will depart. There are beautiful advices in Bani. People ask this question, when is the best time to meditate? Answer is, when you breathe in, say Vaheguru. When you breathe out, say Vaheguru. Say you are the only one. You are the Rajan Raj Panan Pan Devan Dev Upmaman. Lord, you are the King of Kings. You are Ikonkar. You are the only creator. Just praise God with every breath. That's your time. But in today's world, we are very busy. So Amrit Vela Sachanaam Vadiyai Vichar, in the Amrit Vela between 3 to 6 a.m. in the morning is the best time to charge yourself so that during the day you are meditating. You can see the difference because most of the people are asleep at that time. And that is the best time to charge yourself with meditation, with love of Vaheguru. So God, you only know my pain of separation from you. No one else appreciates it. Rahav. That's the essence of the Hukamnama. So what do you learn from it? Pray directly to Vaheguru. How? I'm absolutely desperate to see you day and night.
दर्शन प्यासी दिनस रात, चित वहो अंधे नीत, खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत. Guru showed me, when I prayed like that, Guru showed me that Vaheguru is with you. And Guru opened the kapat. Kapat means a curtain between me and Vaheguru. Khol kapat gur meliya, Nanak har sang meet. And Guru told me, where are you searching for God? God is with you. तेरे नाल ही बैठा. ਉਹ ਤੂੰ ਰਾਤੀ ਸੋਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. So Guru Maharaj showers his mercy. To attain union with Vaheguru, you have to praise Vaheguru like this. Sacha Sahib Sach Tu Mere Shah, Tera Kiya Sach Sab Hoye. Vaheguru, you are the true Lord. And I have no complaint in my life. Whatever you wish, that happens. So I want to remain in your will. Chutha kisko akhiye shaha, duja nahi koe. Whom should I call liar? Whom should I call inferior? I see you in everyone. So this is words of wisdom. Most of the life we spend talking about others, how bad people are. Satsangaji, those breaths, that time is total waste. It will ruin your meditation, ruin all your good karmas when you point fingers at others. Watch it. निंदा किसे की भली नाही, मनमुख मुगत करान. मोह काले तिना निंदका, नरके कोर पवन. Those people who slander the others, they are ruined forever, no matter how much meditation they do. So Guru Maharaj is giving us beautiful advice. Come on. झूठा किसको आखी है? Whom should I call liar, Vaheguru? I can see you in everyone. Under your command, everyone is functioning. So I can't challenge your command. Is your hukum. Sabna vich tu vartada shaha, sab tujhe dhyaven din raat. Vaheguru, you are pervading vartada. You are pervading in everyone. Everyone is meditating upon you day and night. Is water meditating? Satsang ji, yesterday's hukumnama. The earth, sun, moon, underground, water, air, the plants in the forest, the trees, everyone God has created meditates upon Vaheguru. Tart patal आकाश है मेरी जिंदड़ी है, सब हर हर नाम ध्यावे राम. Amazing. But we can't hear. We need spiritual ears to listen. Then we'll hear the naad of Ikonkar throughout the creation. So Guru Maharaj reveals, even the atheist, they deny God's presence. But they deny it because there is a thought in the mind, God is there. And also one day, when they are surrounded by the misery, they bank on God. They remember God. So everyone meditates upon you, God. सब तुझ ही थामो मंगदे मेरे शाहा, तू सबना करें एक दात. Everyone is begging from you. You are the only one giver. You bless everyone. You bless all. But there are only few people who ask for your darshan, ask for merger with you. And you bless them with one best blessing,
they can ask or one can ask. सब ना करें एक दात एक. Everyone is asking for worldly players, but only rare people ask for your darshan, Vaheguru, and you bless them. सबको तुझी विच है मेरे शाह, तुझते बाहर कोई ना है. No one is outside your will. Everyone has to remain in your will. सब जी तेरे तू सबसदा मेरे शाह, सब तुझ ही माहे समाहे. समाhe means to merge back. Look at the creation. Where has creation come from? It has come from one. There was no one before the creation, there was only one God. So all the expansion, the universe you see, where has it come from? It's come from one. When Vaheguru wishes so, nothing will exist except God. So everyone will merge back in with God. So this is a realization that what we see is different forms of Vaheguru. Tere roop ananta. Vaheguru, your forms are countless. But I can see you in every form. सबना की तू आस है मेरे प्यारे, सब तुझे ध्यान है मेरे शाह. My Lord, everyone, you are the hope for everyone, and everyone meditates upon you. ज्यों भावै त्यों रख तू मेरे प्यारे, सच नानक के पातशाह. Whichever way you want to keep me, I'm your slave. Almighty God, keep me that way. Satsanga ji, when you are young, you have ambitions. You want to be engineer, or you want to be accountant or doctor, whatever your dream was or is. But Satsanga ji, sometime you become doctor, you achieve your objectives in life, and you think, I'm still not happy. I'm not satisfied. So the biggest lesson I've got today is, Vaheguru, keep me the way you want to keep me. Bless me with your seva so that I can be in Anand all the time. Sada Anand rahe din rati gunwantiyan pachar. May Satguru bless you all. Have a great day. Forgive all the mistakes. Share the fateh. Vaheguru ji ka khalsa. Vaheguru ji ki fateh.